So good morning to all of you and welcome back again in our online lectures for Valera Science College semester 3 paper 1 having the name morphology of angiosperms and the part of embryology and indoor gardening. So dear students, in the previous lecture we have started the topic which is the part of angiosperm systematics, embryology and indoor gardening. As per our distribution that we have distributed this paper 1 into the 4 units, unit 1, 2, 3 and 4, and we have started unit number 3, which is the part of embryology. In this embryology we are going to discuss the part of pollination, types and significance, anther, tiers of anther, microsporogenesis, structure of pollen grain, development of male gametophyte, then ovule, types of ovule, structure of anatropous ovule, megasporogenesis, then development of female gametophyte, which is polygonum type of ovule or female gametophyte, fertilization, double fertilization and a triple fusion, endosperm, its types, structure of dicot embryo, onagride type and a monocot embryo. So as per our previous lecture, dear students, we have discussed what is meant by the pollination, and we have also discussed the types of pollination. ठीक है, हम लोगों ने pollination क्या होता है वो देखा था, साथ ही में हम लोगों ने देखा कि that what are the types of pollination. So the types of pollination is going on, and in these types of pollination we are discussing the methods of pollination, that how this pollination is carried out. So in the previous lecture we have discussed the factors which are responsible for the process of pollination, and we have also discussed the types of pollination. In these types of pollination that we have discussed the various types of pollination. The first type of pollination, that is the part of self-pollination, and is self-pollination having the different types. Just a minute. So in this we have discussed the self-pollination. यहाँ पे हम लोगों ने self pollination के बारे में देखा था कि that how this self pollination is carried out. The self pollination having the first category, that is the autogamy. In this autogamy we have discussed that the transfer of pollen grains from bisexual flower is pollinated by its own pollen grains, means the transfer of pollen grains from the same flower, same plant. It is a case of autogamy. Then we have also discussed some conditions which are related to this autogamy, that is a chasmogamous condition, homogamous condition, then clistogamous condition, and now we are going to discuss the part of cross pollination. So here we are discussing the part of getonogamy. It is the transfer of pollen grain to the stigma of different flower produced on the same plant. ठीक है, getonogamy के केस में क्या होता है कि जो pollen grains होते हैं वो एक प्लांट से सॉरी सेम प्लांट पे होते हैं लेकिन फ्लावर्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, the transfer of pollen grains from one flower to the another flower belongs to the same species. It is functionally similar to the cross-pollination as it involves the pollinating agents, but it cannot brings about the genetic variations, and it is only of the ecological significance. For example, the cucurbita maxima. So it is an example of getonogamy. Geton means neighboring plant or the neighboring organism, and in this neighboring plant,
basically the transfer of pollen grains from one flower to the another flower, which belongs to the same species. Now, next type of uh, pollination, that is a xenogamy, which is the main part of the क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, xenogamy जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन का हिस्सा है. यहाँ पे इन्होंने बताया है क्रॉस पॉलिनेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग. So it is a type of cross pollination when the pollen grains of one flower is deposited on the stigma of flower of a different plant belonging to the same species with the help of pollinating agencies. तो जीनोगैमी के केस में क्या होता है यहाँ पे? जीनोगैमी मीन्स इट इज अ केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है. तो क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट. ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लांट अलग अलग रहेंगे और फ्लावर्स भी अलग अलग रहेंगे, लेकिन स्पीसीज जो रहेंगे वो सेम रहेंगी. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन व्हेन द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ different flower belonging to the different plant to the same species with the help of pollinating agency. It generates genetically varied offsprings, means यहाँ पे hybrid varieties develop होती है. It is a part of genetically hybrid or the varied offspring. Majority of flowering plants depends on the transfer of pollen grains. ठीक है, ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करने के लिए किसी एजेंट पे डिपेंड होते हैं. Virtually all the seed plants need to be pollinated. Most of the food and fiber crops grown throughout the world depend upon the pollinators for the reproduction. The agents responsible for the pollination have been grouped into the two main categories. मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग pollination की process अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि जो pollen grains होते हैं वो non motile होते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है. तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्होंने दो टाइप के बताए हैं, अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अबायोटिक एजेंट्स में नॉन लिविंग एजेंट्स आएंगे विच इंक्लूड द विंड एंड वाटर, एंड पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एज द एनेमोफिली, and they're having some adaptations. The examples of anemophily, that is a wheat, rice, corn, rye, barley, and oats. Now, next one, that is the pollination by water. अगर water की help से pollination होता है, then it is called as the hydrophily. This hydrophily having some specific examples, for example, Vallisneria, Zostera, Ceratophyllum, etc. And these are the adaptations which are required for the hydrophilous flowers. Hydrophily, basically it is divided into the two main categories, that is hypohydrophily and the epihydrophily. इसके दो ही एग्जांपल्स है. देन बायोटिक एजेंट्स. ठीक है, बायोटिक एजेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स एजेंट्स अबाउट 80% of the plant require the help of other living organism, moving creatures such as insect, birds, bats, snails to transfer their pollen from one flower to the another flower. मतलब 80% pollination जो होता है it is carried out with the help of living organisms or the living agents. So first one, that is a pollination by insect, is called as the entomophily, which having some adaptations. Example of entomophily is rose, jasmine, sesdrum, etc. Then the pollination by birds. So this pollination by birds is called as the ornithophily, and it having the specific example again. Some of the ornithophilous plants are Bombax siva, then Callistemon, which is commonly called as a bottle brush, and Butea monosperma, that is the forest, flame of forest. Then next one, that is the pollination by bats, which is commonly called as the Chiropterophily, and examples of Chiropterophilous plants like that is the Anthocephalus, which is commonly called as a Kadam tree, then Adansonia, baobab tree, and Kaigelia. Then other than this pollinating agents, the next topic, that is outbreeding devices. Again, it is a very important topic which having a little bit of importance related to the pollination.
So this pollination, it having some outbreeding devices, and these outbreeding devices are the part of pollination. ठीक है, pollination का ही हिस्सा होता है outbreeding devices. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कब परफॉर्म की जाती है, मतलब आप लोगों के माइंड में यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. whenever the plant it avoid the self pollination. ठीक है, मतलब ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या करते हैं कि दे गो फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, and to avoid the self pollination they develop some mechanism to avoid the self pollination, and these are called as outbreeding devices. ठीक है, इन्हें outbreeding devices कहा जाता है. तो outbreeding devices में यहाँ पे unisexuality आता है. Next to the unisexuality, that is the part of protogyny and protandry also. ठीक है, protogyny और protandry, these are the different methods of the outbreeding devices. ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, दे ट्राई टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, and this whenever they avoid the self pollination they go for the cross pollination. तो ये जो mechanism होती है to avoid the self pollination is called as the outbreeding devices. So this completes the part of pollination. Now let's just start with the next point, uh, the anther, which is related with the male gamete or the male gametophyte. ठीक है, male gametophyte से related है. So this male gametophyte, that anther, it is related with the male gametophyte, and let's just talk about this male gametophyte. That the male reproductive whorl of flower is called as androecium. ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव whorl होता है फ्लावर का, उसे हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं. ठीक है, फ्लावर सभी को पता है, that flower which consists of the accessory whorls like the calyx and corolla, and the essential whorls like the androecium and the gynoecium. ठीक है, so androecium, it is the part of male reproductive whorl in case of the flower. The male reproductive whorl of the flower is called as the androecium. ठीक है, तो androecium के अगर हम लोग individual members अगर लेते हैं, the individual members of the androecium is called as a stamen. तो ये basic information है. The stamens consist of the three parts: filament, connective, and the anther. Just a minute. So if you go through the essential whorls in case of this flower, ठीक है, flower के केस में अगर हम लोग देखते हैं, तो flower के केस में if you get the structure like this, these are the petals, and inside the petals there is a presence of androecium. So we can show here the androecium, the male part or the male whorl of flower. ठीक है, so this male whorl of the flower is called as androecium, जिसे हम लोग androecium कहते हैं, and the individual member of androecium is called as stamen. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है फ्लावर के अंदर, अगर सिंगल मेंबर अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, इफ वी टेक द सिंगल मेंबर, the single member of this androecium, this single member of androecium is called as stamen. तो स्टेमन जो रहता है इसके टिप पोर्शन पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग एंथर कहते हैं. दिस इज द एंथर. ठीक है, दिस वन इज द कनेक्टिव, ये कनेक्टिव है, एंड ग्रीन पार्ट इज द फिलामेंट. तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होती है एंड्रोशियम के केस में. नाउ द अरेंजमेंट इन द एंड्रोशियम इज देयर.
So the part of androecium, which is called as the stamen. The stamen consists of the three parts, that is the filament, connective, and the anther. So this one is the pink portion is the anther. This joining portion is the connective, and the green portion, that is the filament. Let's just talk about the structure of anther. ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे structure of anther के बारे में. An immature stage of the anther is represented by the group of parenchymatous tissue surrounded by the single layered epidermis. ठीक है, एक immature stage होती है anther की. The immature stage of the anther, which is represented by the group of parenchymatous tissue surrounded by a single layer of epidermis. ये इन लोगों ने TS of anther के बारे में थोड़ा explain किया है. Immature stage of anther is represented by the group of parenchymatous tissue surrounded by the single layered epidermis. Anther is generally the diathecous. ठीक है, anther जो होता है generally diathecous होता है. Now what is this diathecous anther? Diathecous मतलब यहाँ पे इसके anther के दो lobes होते हैं. Diathecous, that is it having the two lobes. तो यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को two lobes पिंक कलर में. ठीक है. So anther generally having the diathecous, it having the two lobes and the tetrasporangiate. Tetra means four, sporangiate मतलब four chambers. pollen chambers जो रहेंगे चार रहेंगे इसमें. मगर मतलब हम लोग इसे अगर कट करते हैं यहाँ से, if we cut this anther, ठीक है, इस anther को अगर हम लोग transversely कट करते हैं, ठीक है, if we cut this anther transversely, we'll get the four chambers. ठीक है, हमें चार चेंबर मिलेंगे यहाँ पे. we'll get the four chambers of this anther, right? ठीक है, one, then two, then three, and this one is a four. ठीक है, so we'll get the four chambers of this diathecous anther. अगर इस diathecous anther को अगर हम लोग कट करते हैं, transversely अगर कट करते हैं, we'll get the four chambers. That's why it is called as a tetrasporangiate. Each monothecous anther contains the two pollen sacs. मोनोथिकस मतलब अगर एक ही एंथर लोब रहता है यहाँ पे तो उसे मोनोथिकस कहा जाएगा, लेकिन डायथिकस जो होता है वो टेट्रालोक्यूलर होता है. इन डायथिकस एंथर फोर पोलन सैक्स आर प्रेजेंट. ये अभी अभी बताया मैंने आपको, फोर पोलन सैक्स, 1 2 3 एंड 4. Therefore it is called as a tetrasporangiate. The heterogeneity, that is a differentiation, arises when some hypodermal cells get transformed into the archisporial cells. So let's just talk about this TS of anther. अभी हम लोग TS of anther के बारे में बात करते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने जस्ट जनरली देखा है यहाँ पे कि दैट एंथर क्या होता है. ठीक है, एंथर इट इज अ पार्ट ऑफ एंड्रोशियम. द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज अ स्टेमन. और स्टेमन के तीन पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. ठीक है, एंथर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो एंथर होता है जनरली एक तो मोनोथिकस होता है या फिर डायथिकस होता है. मोनोथिकस सिंगल लोब, डायथिकस टू लोब्स. अगर टू लोब्स रहते हैं एंथर के और उसे अगर हम लोग ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो विल गेट the four chambers. The TS of anther, the archisporial cells divide into the inner sporogenous cells and outer primary parietal cells. Sporogenous cells form the sporogenous tissues. मतलब ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसके अंदर आपको स्पोरोजिनस टिश्यूज मिलेंगे. जैसे कि अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं यहाँ पे, in case of the TS of anther, so this is the diagrammatic representation of TS of anther. Four chambers are there, 1 2 3 and 4. ठीक है, so the sporogenous tissues are there inside the anther. ठीक है, anther के अंदर sporogenous tissues होते हैं which are responsible for the development of microspores, that is a pollen grains. ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स डेवलप होने के लिए वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, ऐसा इन लोगों ने यहाँ पे बोला है. तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि दैट द टीएस ऑफ एंथर, इट कंसिस्ट ऑफ द आर्चिस्पोरियल सेल्स एंड दीज आर्चिस्पोरियल सेल्स आर डिवाइड्स. ये डिवाइड होते हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स into an inner sporogenous cell and outer primary parietal cell. Sporogenous cells form the sporogenous tissues. Each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. मतलब हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो एक माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन डेवलप करने के लिए कैपेबल होता है.
Parietal cell undergoes the division to form the anther wall layers. Parietal cell layer जो होती है वो क्या करती है? It forms undergo the division to form the anther wall layer. The wall of the mature anther consists of the 4 layers. ठीक है, मतलब मैच्योर एंथर वॉल जो होती है उसमें 4 लेयर्स होती है. पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथेशियम, तीसरी मिडल लेयर और चौथी टैपेटम. So epidermis is the outermost protective layer made up of the tubular, that is the flattened cells. Endothelium is a subepidermal layer made up of the radially elongated cells with fibrous thickening. Inner to endothelium is a middle layer which is made up of thin walled cells, 1 to 2 layered, which may disintegrate in a mature anther. Tapetum is the innermost nutritive layer of the anther wall. It immediately encloses the sporogenous tissues, that is the microspore mother cells. तो कुछ इस तरह से जो TS of anther होता है, the TS of anther consists of basically the 4 layers. anther wall जो होती है उसकी 4 layers होती है. ठीक है, 4 layers कौन सी होती है? That is epidermis. First one is epidermis, then endothelium, then middle layer and the tapetum. So these are the 4 layers. So about this structure of TS of anther we will discuss again in detail in the next lecture. I think we have to stop here. Let's just revise that what we have discussed in the today's lecture. In the today's lecture we have discussed the significance and the mechanism of pollination with the help of different types. Then we have also discussed some of the agents which are responsible for the pollination, that is abiotic and abiotic agents. Later on we have started the new topic that is a part of anther, and this anther, it is a part of androecium. Androecium, it is a male reproductive whorl of the flower. Individual member of the androecium, these are called as the stamens. ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर जो होते हैं एंड्रोशियम को उन्हें स्टेमन्स कहा जाता है. स्टेमन्स बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का हम लोगों ने जस्ट एक ओवरव्यू लिया है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो होता है एक तो मोनोथिकस या फिर डायथिकस होता है. मोनोथिकस जो रहेगा उसके पास में 2 पोलन सैक्स मिलेंगे और डायथिकस जो रहेगा उसके पास में 4 पोलन सैक्स या फिर पोलन चेंबर वहां पे मिलेंगे. टीएस ऑफ एंथर जो है हम लोग फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे along with the diagrammatic representation. I think we have to stop here. Remaining portion we will discuss in the next lecture. आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है और वहां पे अपनी अटेंडेंस दे देनी है. ठीक है, so I think we have to stop here. Remaining portion we will discuss in the next lecture. तब तक के लिए सब लोगों को stay home, stay safe, सब लोगों को